नमस्कार। आज हम भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसने ना पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी जैसे कई 9 पुराने कानूनों को एक में मिला दिया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में बदला क्या है, खास तौर पर जो नए तरह के वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनके लिए क्या है इसमें, और पुराने कानूनों से ये कितना अलग है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस संहिता का लक्ष्य क्या है। इसने 9 अलग अलग कानूनों को, जैसे कर्मचारी मुआवजा कानून 1923 है, ईएसआई एक्ट 1948, पीएफ एक्ट 1952, फिर मातृत्व लाभ कानून 1961, ग्रेच्युटी वाला 1972, इन सबको एक जगह कर दिया है। मकसद, जैसा आपने कहा, सीधा सा है कि सोशल सिक्योरिटी के नियम आसान हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आए। हाँ, और एक चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है कर्मचारी की परिभाषा। इसका दायरा काफी बढ़ाया गया है ना। मतलब अब इसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, यहाँ तक कि फिक्स टर्म कर्मचारी भी शामिल हैं। ये शायद पहली बार है कि कानून सीधे तौर पर इस पारंपरिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिश्ते से बाहर काम करने वालों को पहचान रहा है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ फायदे जैसे पीएफ और ईएसआई हैं, उनके लिए कर्मचारी की परिभाषा शायद वेतन सीमा पर निर्भर करेगी और वो वेतन सीमा केंद्र सरकार बताएगी। और असंगठित श्रमिक कौन हुए, मतलब जो घर से काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या ऐसे वेतन पाने वाले जो मौजूदा कानूनों या इस संहिता के जो मुख्य प्रावधान है ना, पीएफ, ग्रेच्युटी, उनके दायरे में नहीं आते। समझ गया। अच्छा, अब जरा ग्रेच्युटी पर आते हैं। सुना है इसमें फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा बदलाव है। एकदम सही कहा आपने। पहले क्या था, ग्रेच्युटी आमतौर पर 5 साल की लगातार नौकरी पूरी करने पर मिलती थी, वो भी स्थायी कर्मचारियों को। हाँ, बिल्कुल। पर अब जो फिक्स टर्म वाले हैं ना, उनके लिए ये उनके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलेगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, ग्रेच्युटी दे हो जाएगी, भले 5 साल ना हुए हों। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब 5 साल का इंतजार खत्म। जी हाँ, उनके लिए। और एम्प्लॉयर को ये पैसा 30 दिन में देना होगा, नहीं तो ब्याज, वरना ब्याज लगेगा। और हाँ, संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाने की मुझे एक संभावना रखी गई है। ठीक है। और मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट, या उसमें क्या स्थिति है? कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, मातृत्व लाभ की जो अवधि है वो तो वही है, पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते। ठीक। लेकिन ये फायदा अभी भी सबको नहीं मिलता। ये सिर्फ उन जगहों पर लागू है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। ओह, अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असंगठित क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं शायद अभी भी इसके दायरे से बाहर रह जाएंगी। हाँ, ये एक सीमा है, बिल्कुल। तीसरे बच्चे या उसके बाद 12 हफ्ते का लाभ है, और जो गोद लेने वाली माँ है या सरोगसी से माँ बनती है, 3 महीने से कम के बच्चे के लिए उन्हें भी 12 हफ्ते का लाभ मिलेगा। एक और चीज, आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी इसमें रखा गया है। तो कवरेज बढ़ाने की कोशिश तो दिख रही है, लेकिन वो 10 कर्मचारी वाली शर्त अभी भी है। जी, वो सीमा बनी हुई है। असली चुनौती इसे असंगठित क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंचाने में ही होगी। सही कहा। आगे बढ़ते हैं ईएसआई और ईपीएफ की तरफ। यहाँ क्या कुछ नया है? ये योजनाएं तो जारी रहेंगी। एक नया पहलू है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये क्या है? मतलब ये कि जो अधिकारी होंगे वो सिर्फ इंस्पेक्शन या गलतियां पकड़ने नहीं आएंगे, वो नियोक्ताओं को सलाह भी देंगे, नियमों का पालन करने में मदद भी करेंगे, एक तरह से मददगार की भूमिका में। अच्छा, ये तो सकारात्मक लगता है। हाँ, और ईएसआई के जो फायदे हैं, बीमारी, मेडिकल, विकलांगता लाभ वगैरह, वो सब जारी रहेंगे। मजदूरी यानी वेजेस की नई परिभाषा की भी काफी बात हो रही है। उसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नई परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल है। ये तो हुआ बेस। हाँ। अब नियम ये है कि अगर बाकी के भत्ते कुछ एक्सक्लूजन्स को छोड़कर इस बेस के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो जितनी रकम ज्यादा है उसे भी मजदूरी माना जाएगा। ओहो, तो इसका सीधा असर पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा? बिल्कुल सीधा असर। मतलब अगर भत्ते ज्यादा है तो पीएफ और ईएसआई भी ज्यादा कटेगा। यूं समझिए कि पहले पीएफ सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए पर कटता था मोटे तौर पर,
अब अगर दूसरे अलाउंस बहुत ज्यादा है तो उनका भी एक हिस्सा पीएफ कैलकुलेशन में आ जाएगा। समझ गया। और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम है? लगता है ये संहिता का एक बड़ा फोकस है। बिल्कुल है। उनके लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष यानी सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रस्ताव है। फंड? हाँ। कहाँ से आएगा पैसा इसमें? इसमें केंद्र और राज्य सरकारें पैसा डालेंगी, कंपनियों के सीएसआर फंड से भी आ सकता है, और सबसे अहम जो एग्रीगेटर्स हैं, मतलब जो गिग वर्कर्स को काम देते हैं, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी या कैब कंपनियां, वो भी योगदान देंगे। अच्छा, कितना योगदान? उनके सालाना टर्नओवर का 1 से 2% के बीच, लेकिन ये उन वर्कर्स को दिए जाने वाले पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं होगा। फिर एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा जो इन वर्कर्स के लिए योजनाएं बनाएगा, उनकी निगरानी करेगा, जैसे जीवन बीमा, विकलांगता कवर, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ, बुढ़ापे की सुरक्षा, ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इन वर्कर्स का? उसके लिए आधार जरूरी होगा। फंड बनाना और बोर्ड बनाना तो ठीक है, पर क्या लगता है आपको ये लाभ सच में इन वर्कर्स तक आसानी से पहुंच पाएंगे? चुनौतियां तो होंगी इसमें। चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं। देखिए, फंड में लगातार पैसा आता रहे, ये सुनिश्चित करना, फिर योजनाएं ऐसी बने जो वाकई उनकी जरूरतें पूरी करें, और सबसे बड़ी चुनौती होगी इन लाखों वर्कर्स का ठीक से रजिस्ट्रेशन करना और उन तक लाभ पहुंचाना। जमीनी स्तर पर इसे लागू करना आसान नहीं होगा। सही बात है। अच्छा, ये सारे बदलाव तो हो गए, पर सरकारी ने लागू कैसे करवाएगी? मतलब अगर कोई नियम ना माने तो क्या सजा वगैरह भी सख्त हुई है? हाँ, अनुपालन यानी कंप्लायंस पर अब पहले से ज्यादा जोर है, और दंड वो काफी सख्त कर दिए गए हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे अगर कोई नियोक्ता कर्मचारी का पीएफ या ईएसआई का पैसा काटकर जमा नहीं करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और साथ में 1 से 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। अरे बाप रे, ये तो काफी सख्त है। हाँ, और अगर यही गलती दोबारा की, मतलब रिपीट ऑफेंस हुआ, तो सजा और भी गंभीर है, 2 से 5 साल तक की कैद और 2-3 लाख का जुर्माना। और ऐसे मामलों में फिर कोई समझौता, कंपाउंडिंग भी नहीं हो सकता। अच्छा। हालांकि पहली बार के कई अपराधों के लिए नियोक्ता को एक मौका दिया जा सकता है कि वो अपनी गलती सुधार लें, अगर पिछले 3 साल में वैसी गलती न की हो। तो कुल मिला के देखें तो ये संहिता सामाजिक सुरक्षा कानूनों का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग है। नए तरह के वर्कर्स को शामिल किया गया है, कुछ फायदों में बदलाव हुए हैं, और नियमों का पालन ना करने पर सजा भी कड़ी है। यही मुख्य बातें लगती हैं। निश्चित रूप से ये भारत के श्रम कानूनों को आज के काम करने के तरीकों के हिसाब से ढालने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है, और ये हर तरह की वर्किंग अरेंजमेंट को, आप कह सकती हैं, कानूनी पहचान देती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली परीक्षा इसके लागू होने में होगी। कैसे इसे देश भर में, राज्यों में एक समान तरीके से लागू किया जाता है, और कैसे ये पक्का किया जाता है कि इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर जो नए शामिल हुए हैं, असंगठित और गिग श्रमिक। हाँ, और एक सवाल मन में रह जाता है कि क्या ये सब कानूनों को एक साथ लाने से सामाजिक सुरक्षा पाना सच में आसान होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में खासकर जो ज्यादा कमजोर वर्ग हैं उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाएं। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵੀਵੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, मैटरनिटी लाभ वगैरह। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। चलो फिर शुरू कर दें। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ, ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CSR ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਖੁਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2%? ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ 1-2% ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਾਨੀ ਵੇਜਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ DA, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨਸ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, HRA, ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ। ਓਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ DA ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, PF ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ PF ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਅ ਐਕਟ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਉਹੀ ਨੇ। 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ। 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਫਿਕਸਡ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ EPF ਤੇ ESI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾ? EPF ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁਣ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ESI? ESI ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ESI ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਜਾਂ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਫਰਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਡ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ, ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗਿਗ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲकुल, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। खुशामदीद। आज हम हुकूमत हिंद के नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पर एक तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा कदम है जिसने 9 पुराने लेबर कवानीन को एक ही कानून में समो दिया है। जी बिल्कुल। इनमें आप देखें, प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, फिर ईएसआई, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब अहम कानून शामिल हैं। जी हाँ। हमारे पास सरकारी वेबसाइट्स, कुछ कानूनी तज्जिए, VVGNLI रिपोर्ट्स, इस तरह के ज़राए हैं। और मकसद यही है कि समझें कि पुराने निज़ाम से अब क्या बदला है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनों को इकट्ठा करने की बात नहीं है, असल मकसद तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फैलाना है। फैलाना मतलब किन लोगों तक? यानी मुनज़्ज़म शोबे के साथ साथ खास तौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुन, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन सब तक पहुंचाना। तो आइए देखते हैं कि इस कोड में क्या खास बातें हैं। सबसे बड़ी तब्दीली तो शायद यही है, गैर मुनज़्ज़म शोबे, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल करना। इनकी बाकायदा तारीफें भी दी गई हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे गिग वर्कर वो है जो आप समझे रिवायती मालिक मुलाजिम वाले रिश्ते से बाहर काम करता है, फ्रीलांसर्स वगैरह। ठीक। और अहम बात यह है कि इनकी रजिस्ट्रेशन अब आसान है, सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार की बुनियाद पर हो जाएगी। अच्छा, और इनके लिए फलाही स्कीमों का क्या होगा? फंडिंग कहाँ से आएगी? उसकी फंडिंग के लिए कई जराए होंगे, मरकजी, रियासती हुकूमतों, कंपनियों के CSR फंड्स और खास तौर पर एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स
जैसे ये ऑनलाइन टैक्सी या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स? जी वही, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का तकरीबन 1 से 2% हिस्सा देना होगा, लेकिन ये रकम उन कारकुनों को जो कुल अदायगी होती है उसके 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये दिलचस्प है कि एग्रीगेटर्स को भी जिम्मेदार बनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये 1-2% काफी होगा इतने सारे कारकुनों के लिए? ये देखना होगा। अच्छा, जिचकी के फवायद यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स, उनमें क्या नया है? यहाँ सजाओं को काफी सख्त किया गया है। अगर कोई इदारा मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देता तो पहले जुर्म पर ही 6 माह तक कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पहले ये जुर्माना बहुत कम था, शायद 2 से 5,000। ओहो, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, और अगर बार बार खिलाफ वर्जी हो तो कैद 3 साल तक और जुर्माना 3 लाख रुपए तक जा सकता है। तो इदारों के लिए ये एक सख्त पैगाम है। वाकई सख्त पैगाम है। और वो मुश्तरका क्रैच वाली बात क्या है? हाँ, वो भी एक अहम तब्दीली है। अब कई छोटे इदारे मिलकर एक मुश्तरका क्रैच की सहूलत दे सकते हैं। ये तो अमली हल लगता है। अलबत्ता एक बात नोट करने वाली है कि नए कोड में मेडिकल बोनस की ज्यादा से ज्यादा रकम का जिक्र नहीं है। पुराने कानून में हद थी। अच्छा, ये क्यों? इसकी वजह वाज़ेह नहीं है, शायद बाद में कवायद में वाज़ेह किया जाए। ठीक है, अब ग्रेजुटी की बात करते हैं। सुना है फिक्स टर्म मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये एक बड़ी तब्दीली है। अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर यानी फिक्स्ड टर्म पर काम करते हैं उन्हें भी ग्रेजुटी मिलेगी। पूरी या काम के हिसाब से? नहीं, पूरी नहीं, जितनी मुद्दत काम किया है उसके तनासुब से मिलेगी, यानी प्रो रेटा बुनियाद पर। और इनके लिए वो 5 साल की मुसलसल मुलाजमत वाली शर्त भी खत्म कर दी गई है। ये तो बहुत अहम है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन के लिए बड़ा रिलीफ है। जी हाँ, और वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए भी मुद्दत 5 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है। अच्छा, अब आते हैं ईपीएफ और ईएसआई पर। इनका दायराकार भी बढ़ाया गया है। जी, ईएसआई अब 10 या उससे ज्यादा मुलाजमीन वाले तमाम इदारों पर लागू होगा, सिवाय मौसमी फैक्ट्रियों के। और अगर काम खतरनाक हो तो फिर मुलाजमीन की तादाद नहीं देखी जाएगी। चाहे एक मुलाजिम ही क्यों ना हो, ईएसआई लागू होगा। ठीक है। और ईपीएफ का? ईपीएफ के लिए वो जो पुरानी इंडस्ट्री की लिस्ट थी वो खत्म कर दी गई है। अब सीधा हिसाब है, 20 या ज्यादा मुलाजमीन हैं तो इदारा ईपीएफ के दायरे में आएगा। तो मतलब अब ज्यादा इदारे और मुलाजिम इन स्कीमों में शामिल हो जाएंगे? उम्मीद तो यही है, इससे कवरेज बढ़ेगी। क्या इदारों के लिए कोई लचक भी है? मतलब वो निकलना चाहें तो? हाँ, एक ऑप्शन दिया गया है। इदारे मुलाजमीन की अक्सरियत की रजामंदी से रजाकाराना तौर पर ईपीएफ या ईएसआई के दायरे में आ भी सकते हैं और कुछ शराइत के तहत निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई तनाज़ा हो वाजिबात का, तो फिर अपील दायर करने से पहले बकाया रकम का 25% जमा करवाना लाजमी होगा। ये एक नई शर्त है। समझ गया। अच्छा, कुछ तारीफों में भी तब्दीली आई है, खास तौर पर मजदूरी यानी वेजेस की तारीफ। जी, मजदूरी की एक यूनिफॉर्म तारीफ लाने की कोशिश की गई है। इसमें बुनियादी तनख्वाह और महंगाई अलाउंस तो शामिल है, लेकिन कई दूसरे अलाउंसेस जैसे एचआरए, बोनस, ओवरटाइम, उनको कुछ शराइत के साथ बाहर रखा गया है। तो इसका असर पड़ेगा फिर पीएफ, ग्रेजुएटी वगैरह के हिसाब पर? बिल्कुल पड़ेगा। ये कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, कुछ के लिए शायद इतना नहीं। और वो इंतजामी तब्दीली, इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गया है। जी हाँ, नाम के साथ साथ किरदार बदलने की भी कोशिश है। मतलब सिर्फ चेकिंग नहीं, सिर्फ चेकिंग या गलतियां निकालना नहीं, बल्कि इदारों को कानूनों पर अमल करने में मदद देना, मशवरा देना, ये भी काम होगा। और कानूनी कार्रवाई से पहले तामील का मौका देना होगा। यानी सहूलतकार का किरदार ज्यादा है। जी, यही मकसद लगता है। और ईएसआई के लिए भी पुरानी इस्तिलाहात जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जगह अब सिर्फ एम्प्लॉयर और ठेकेदार इस्तेमाल होगा। ये तो मुस्बत लगता है। लेकिन ये सब नाफिज कहाँ तक हुआ है? क्या सब रियासतें साथ हैं? सूरत हाल मिली जुली है। मरकज ने तो नोटिफाई कर दिया है। नवंबर 2022 तक तकरीबन 26 रियासतें और यूनियन टेरिटरीज भी अपने मसूदा कवानीन बना चुकी थीं। लेकिन कुछ बाकी हैं? जी, कुछ अभी बाकी हैं।
और जहां कानून बने हैं वहां भी थोड़ा फर्क है। जैसे केरला में जुर्माने के तस्फिये का तरीका अलग है, या तामीराती कारकुनों के सेस की वसूली में त्रिपुरा और यूपी के कानूनों में कुछ फर्क नजर आता है। तो थोड़ी पेचीदगियां हैं अभी नफाज में। हाँ, ये यकसानियत ना होना अमली तौर पर मसाइल पैदा कर सकता है। तो खुलासा ये है कि ये नया सोशल सिक्योरिटी कोड वाकई एक बड़ी कोशिश है। दायराकार बढ़ाया गया, नए कारकुन शामिल हुए, सजाएं सख्त हुई। बिल्कुल, ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बदलने की एक अहम कोशिश है। लेकिन दो बड़े सवाल फिर भी जहन में आते हैं। क्या? एक तो ये कि क्या ये कोड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की तमाम सिफारिशात पर पूरा उतरता है, ख़ास तौर पर तनख्वाह की हद ख़त्म करने और तमाम इदारों पर चाहे एक ही मुलाजिम हो उसे लागू करने के हवाले से। ये अहम नुक्ता है। और दूसरा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो तारीफें हैं, क्या वो बिल्कुल वाज़ेह हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इनके इब्हाम की वजह से अमली निफाज में, ख़ास तौर पर फंडिंग और फ़वाइद देने में मुश्किलात आए। सही कहा। ये वो सवालात हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी कि ये कोड जमीन पर कैसे काम करता है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि ये तब्दीलियां हकीकी मानों में कारकुनों तक कैसे पहुंचती हैं। Welcome to the Deep Dive, where we take your sources and, well, we dive right in to get to the core insights. Good to be here. Today we're tackling something really significant, a major shift in India's labor scene. The Code on Social Security, 2020. It's definitely a big one. Yeah, and based on the materials you've given us, government sites, research, even some AI platform inputs, our job today is to really compare this new code with the 9 older laws it replaced. That's the plan. Look at the changes, big and small, and what they actually mean. Exactly. Let's try and unpack what this means for workers, for employers, and kind of the future of Social Security in India. Okay, so at its core, the SS Code 2020, it's about amending and crucially consolidating those existing laws. Right, bringing them together. But the bigger picture, the main objective is really to extend Social Security benefits much wider, to cover all employees and workers, organized, unorganized, you name it. So aiming for broader coverage and I guess a simpler system overall, that sounds like a massive undertaking. It really is. Think about it taking 9 separate complex laws. Like, Well, you've got the Employees Compensation Act from way back in 1923, the ESI Act, EPF Act, maternity benefit, gratuity, also things like the Sin Workers Fund, Building Worker Cess, the Unorganized Workers Act from 2008. quite a list. Exactly. And rolling them into one single framework, the hope is for a more uniform, maybe more streamlined approach. And this is where, looking at the sources, it gets really interesting. The scope of who's covered seems to have expanded dramatically. Yeah. That's not just your typical employee anymore, is it? Absolutely not. That's probably one of the biggest talking points. The code explicitly pulls in groups that were, let's say, on the fringes before or not formally covered at all. Like who specifically? We're talking unorganized workers, fixed-term employees, and the big ones everyone discusses, gig workers and platform workers. Okay. Plus, the definition of interstate migrant workers has been broadened too. It's more inclusive now, covering self-employed migrants and those changing jobs within the destination state, subject to a wage threshold. That feels like a necessary step, acknowledging how work itself is changing, right? The nature of employment. Precisely. Can we quickly define those key new categories just based on how the code sees them? Say, unorganized worker. Sure. So an unorganized worker is defined quite broadly. It could be a home-based worker, someone self-employed, or a wage worker in the unorganized sector. It also loops in some workers in the organized sector if they aren't covered by certain other industrial laws. Okay. And a gig worker. A gig worker is basically anyone earning from work outside that traditional employer-employee relationship. Think project-based, task-based work. Got it. And platform worker. Sounds similar but distinct. It is. A platform worker is specifically someone using an online platform, an app, a website that connects them with organizations or individuals needing specific services. Again, outside the standard employment model. So definitely trying to keep pace with the digital economy. Okay, let's dig into some of the specific benefits then. How are they handled now compared to the old laws? Maybe start with maternity benefit. Right, maternity benefit. Eligibility-wise, a woman needs to have worked for the establishment for at least 80 days in the 12 months just before her expected delivery. And the benefit duration. Maximum period is still 26 weeks, but there's a catch. Yes, if a woman already has 2 or more surviving children, the benefit is capped at 12 weeks, and she can't take more than 6 of those weeks before the expected delivery date. Okay.
And the payment amount? It's based on her average daily wage. Importantly, it can't be less than the minimum wage set under the Separate Wage Code, 2019. And what about adoption or commissioning mothers? They're covered too. A woman adopting a child under 3 months or a commissioning mother gets 12 weeks of benefits starting from when the child is handed over. What about job security during this period? Can an employer dismiss someone? Generally, no. The code maintains the protection an employer can't discharge or dismiss a woman because of her maternity absence. There's an exception for gross misconduct, but even then she has the right to appeal that decision. Any other notable changes, like work arrangements? Yes, the code explicitly mentions the possibility of working from home during the maternity period if both the employer and employee agree on the terms. It formalizes that option. Now, you mentioned penalties earlier. What about enforcement here? Are the penalties stronger for employers who don't comply with maternity benefits? Oh, significantly stronger. This is a major change. If an employer repeatedly fails to provide the benefit, the penalty now includes imprisonment for 2 to 3 years and a fine of INR 300,000. 3 lakh rupees. Wow. How does that compare to before? Under the old 1961 Act, a repeat offense might lead to imprisonment up to 1 year or a fine up to just INR 5,000 or potentially both. So going from a max fine of 5,000 rupees to a mandatory 300,000 plus potential jail time for repeat offenses, that's quite a statement. It absolutely signals a much tougher stance on compliance for maternity benefits, no question. Okay, let's shift gears to gratuity, that lump sum payment on leaving employment. What are the key updates there? A really important one is extending gratuity eligibility to fixed-term employees. So contract workers who might not have stayed the full 5 years. Exactly. Previously, they often missed out. Now they're entitled to a pro rata gratuity payment based on their service duration, even if it's less than 5 years. So that 5-year continuous service rule doesn't apply to them? Or in other cases? Correct. For fixed-term employment expiry, or in cases of death or disablement while in service, that 5-year minimum service condition for gratuity is waived. And when does gratuity become payable, generally? On superannuation, retirement, resignation, death or disablement due to accident or disease, termination of a fixed-term contract, or other events the government might notify. How's it calculated? Standard calculation is 15 days' wages for each completed year of service. Yeah. For seasonal establishments, it's 7 days per season. And the payout time frame. Does the employer have a deadline? Yes, they need to figure out the amount and pay it within 30 days of it becoming payable. Any delay means they owe simple interest on that amount. Is there a maximum limit? Yes, the central government can notify a maximum amount payable as gratuity. And your sources also mentioned something specific for working journalists. Oh, Yeah, a reduced period of continuous service needed for them to qualify, but the exact reduction wasn't specified in the material we reviewed. okay. Still, extending it to fixed-term workers feels like a big practical change. How about employees' state insurance, ESI? What's new there? Well, first, geographically, its applicability is expanded. It now covers all 740 districts. Nationwide coverage, basically. Pretty much. And in terms of who's covered, plantation workers are now included. And connecting back to our earlier point, there's provision to link gig workers and unorganized sector workers with the E6 system. So potentially opening up ESI benefits like healthcare to them as well. That seems to be the long-term goal, yes. The code also allows for voluntary registration if the employer and most employees agree. And the government can extend ESI even to hazardous jobs with just one employee. What if an employer defaults on payments? Does the employee lose out? No, and this is crucial. If an employer fails to pay their share, ESIC is still obligated to provide the benefits to the employee. ESIC then has the power to recover those costs, plus interest and damages, directly from the defaulting employer. That's important protection. And what does the ESI fund actually cover? It's specifically for things like sickness benefit, maternity benefit, disablement benefit if injured at work, dependence benefit in case of death, medical treatment, and funeral expenses. Can families be covered? Or retirees? Yes, medical benefits can be extended to families, and they might continue for individuals who retire, possibly subject to continued contributions. ESIC also has the flexibility to partner with state governments or even private entities to deliver medical care. And disputes, where do they go? Any questions about whether someone is an employee under ESI, their wages, contribution rates, or benefit entitlement, those go to a specialized employees insurance court, not the regular civil courts. Okay, let's talk about compensation for workplace injuries, workers' comp, or employment injury benefit. How does the code handle that?
This chapter provides compensation for injury or occupational disease arising out of and in the course of employment. It covers temporary disability, permanent disability, and death. Who's liable? The employer. Generally, yes, the employer is liable. There are exceptions, though. The employer might not be liable if the injury happened because the employee was, say, under the influence of drink or drugs, or willfully disobeyed a clear safety rule, or willfully removed a safety device. But there's a caveat. Yes, an important one. Even in those situations, if the act that caused the injury was done for the purposes of the employer's trade or business, the employer remains liable for compensation. Interesting nuance. What about the compensation amounts? For death resulting from an injury, it's 50% of the deceased's monthly wages multiplied by a relevant age factor from a schedule or a notified minimum amount, whichever is more. For permanent total disablement, it's 60% of monthly wages times that age factor, again, subject to a minimum notified amount. How is the money paid out, especially in case of death? Compensation for death, or any lump sum for permanent disablement paid to a woman or a person under legal disability, must be deposited with a competent authority designated by the government. It's not paid directly by the employer, although they can make small advances against it. What about diseases caught at work? The code includes a schedule, third schedule, listing specific occupational diseases. If a worker contracts one of these diseases after being employed in that specific type of work for a continuous period of at least 6 months, it's treated as an injury by accident, making them eligible for compensation. And disputes here, same as ESI. Yes, similar principle. Any questions about liability, the amount, or duration of compensation under this chapter are decided by the competent authority, not by civil courts. Now, there was also a specific cess mentioned for building and other construction workers, right? How does that work? Correct. The code continues the levy of a cess, specifically to fund Social Security and welfare for building workers. The rate is set by the government, between 1% and 2% of the total cost of construction. Not more than 2%, not less than 1%. And the employer pays this. What if they're late? Yes, the employer constructing the building is liable to pay. If they delay, they owe interest. They're supposed to self-assess the cess amount based on their construction cost and pay it within 60 days of finishing the work. Can states offer exemptions? Yes, if an employer is already paying a similar cess under a corresponding state law for building workers, the state government can exempt them from paying this central cess. The sources mentioned some issues with this cess, though. Implementation challenges. They did. Challenges like shortfalls in collecting the cess, particularly from local government bodies undertaking construction, and also issues with the quality and completeness of worker registration data. Things like missing ATAR numbers or difficulties tracking migrant construction workers accurately. Who actually benefits from this fund? Who can register? Building workers aged between 18 and 60 who've been engaged in building or construction work for at least 90 days in the preceding 12 months. That's the eligibility criteria for registration. And when does registration stop? It ceases when they turn 60 or if they haven't worked for the required 90 days in a year. Okay, let's quickly touch on the Provident Fund, EPF. Any major changes under the code? One key procedural change affects employers appealing against EPF dues assessments. They now have to deposit 25% of the disputed amount up front with the Social Security organization before their appeal is even heard. So, pay first, argue later, to some extent? Kind of, yes. For a quarter of the disputed amount anyway. Another point is about contribution rates. The central government sets those. And importantly, during times of crisis. Like a pandemic. Exactly. During a pandemic, endemic, or national disaster, the government gets the power to defer or reduce contributions, either the employer's share, the employee's share, or both, for up to 3 months at a time. That could provide some temporary relief in emergencies. Potentially, yes. Administration-wise, it continues under the Central Board of Trustees of the EPF, which is set up as a body corporate. Did the sources mention anything concrete about, say, unemployment benefits under the code? The code framework does mention providing for unemployment benefits, and it replaces the old Employment Exchange Act with provisions for career centers. However, the specifics like how unemployment benefits would actually work, eligibility, duration, funding weren't really detailed in the sources you provided. Same for the detailed functions of these new career centers. It seems like areas still needing further development or clarification. Right. Okay, let's circle back to what you called one of the biggest changes, the inclusion of gig and platform workers. What kind of Social Security is actually planned for them? This is where the code introduces a new framework.
It empowers the government to create specific schemes tailored for gig and platform workers. And what might these schemes cover? The possibilities listed include things like life and disability insurance cover, health and maternity benefits, old age protection, perhaps some kind of pension or savings scheme, and even support for skill development. That sounds ambitious. How on earth would these be funded? Yeah. Given the non-traditional work relationship? That's the million-dollar question, really. The funding model is designed to be a mix. Contributions could come from the central government, the state governments, potentially from corporate social responsibility, CSR funds, from the workers themselves, the beneficiaries, and crucially, from the aggregators. Aggregators, you mean the platforms, the Ubers, the Swiggies, the Amazon. Exactly those kinds of companies. The code mandates that these aggregators contribute between 1% and 2% of their annual turnover, specifically for the Social Security of their gig and platform workers. 1 to 2% of their turnover. Yes, but there's a cap. That contribution cannot exceed 5% of the total amount the aggregator pays out to those gig and platform workers. Okay, a cap based on payouts. Does the code specify which aggregator? It does. The 7th schedule lists various categories: ride-sharing services, food and grocery delivery platforms, content and media service providers using freelancers, e-marketplaces connecting buyers and sellers directly. That's a pretty novel mechanism, making the platforms contribute directly based on turnover. Are there concerns about how this will work in practice? Absolutely. The sources highlight several challenges. First, just correctly classifying who is a gig worker versus a platform worker versus something else can be tricky. Then there's the inherent flexibility of this work. How do you design stable Social Security around that? And the big one is financing. Will the aggregator contributions plus government funds, etc., be enough? How will the cost sharing actually function? These are major implementation hurdles. Any hints about future plans beyond this framework? Your sources mention some potential future directions, ideas like having platforms contribute a percentage towards a provident fund for these workers, maybe linking them into the government's main health insurance scheme, PM Jan Arogya Yojana, and exploring other insurance or retirement options. But these seemed more like future possibilities than concrete plans already laid out in the code itself. So a framework is there, but the details and effectiveness are still unfolding. How is this whole complex system meant to be administered and monitored for compliance? The code establishes several bodies. We mentioned the EPF Central Board and the ESI Corporation. There are also national and state-level Social Security boards specifically for unorganized workers and state-level welfare boards for building workers. A lot of boards. Yes, and there's a push towards better data management, creating a centralized database for unorganized workers, mandating digital record keeping by employers. The idea is to make implementation smoother. Any changes in enforcement personnel? Yes, the code introduces a new designation, Inspector cum Facilitator. Facilitator. Sounds less adversarial than just inspector. That seems to be the intention. Their role includes advising employers and employees on how to comply, not just catching violations. They still have powers to inspect workplaces potentially chosen randomly via web-based systems and to search and seize records if they suspect an offense. But there's also this facilitator aspect. And if they do find non-compliance, we saw the huge jump in maternity penalties. Is that trend seen elsewhere? Definitely. Penalties for various violations are generally much stricter under the code compared to the laws it replaced. Minimum fines are substantially higher across the board. For example, failing to pay contributions or submit required returns might now attract a minimum fine of INR 50,000, up from maybe INR 5,000 before. Wow. And repeat offenses. They attract even harsher penalties, including potentially imprisonment. However, the code also allows for compounding some offenses, essentially settling them by paying a fine, and it mandates giving the employer a chance to explain themselves before initiating prosecution. Okay, so pulling all these threads together. Yeah. What are the big picture implications? What should we take away from this massive legislative change? Well, the stated goal is undeniably ambitious. Trying to achieve universal Social Security coverage in India, or getting much closer to it, while also simplifying what was a very fragmented legal landscape. And the potential wins. What looks promising on paper? The significantly expanded coverage is key. Explicitly including gig and platform workers is a major step. Adapting benefits like gratuity for fixed-term employees also reflects modern work patterns. These could bring millions more under some form of social safety net. Plus the stronger penalties. Yes, the increased penalties aim to boost compliance, which has always been an issue. But it's not all straightforward. The sources raise concerns too.
Absolutely. Implementation is the big question mark. Are the funding mechanisms, especially for the new schemes for gig platform union organized workers, going to be adequate and sustainable? How effective will the multi-layered governance structure actually be? And does the code truly create a unified, rights-based system, or is it more like a cleaned-up compilation of old laws with some new chapters added? These are valid concerns raised in your materials. So the real test is yet to come. It depends entirely on how it's rolled out and managed on the ground. Precisely. The success of the code hinges on effective implementation, consistent enforcement, ensuring the registration processes work for everyone, especially the newly included vulnerable groups, and figuring out the practicalities of things like the aggregator contributions. Okay, so what does this all mean for you listening in? The Code on Social Security 2020 is clearly a monumental piece of legislation. It's trying to fundamentally reshape India's social protection system. It aims to bring millions more into the fold, particularly those in non-traditional work, while trying to make the whole system more coherent. It directly tackles the changing world of work by recognizing gig and platform labor and making adjustments for things like fixed-term contracts. But, as we've discussed, like any reform this huge, its true impact depends on the execution. The practical challenges of registration, funding, enforcement, and ensuring genuine access to benefits for everyone covered, that's where the focus needs to be now. Which leaves us with a thought to mull over. Given how rapidly work is still changing automation, AI, even newer forms of gig work. Right. So, here's the question for you. Is expanding and consolidating our existing models of Social Security, even significantly, going to be enough for the long haul? Or will the future demand entirely new paradigms, completely different ways of thinking about worker protection and benefits? Reflecting consider. That's our deep dive for today into India's Code on Social Security 2020. We hope this gave you a clearer picture of this complex but incredibly important change and what it might mean